Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up two case studies, case study number 3 and case study number 4. We have already covered case study number 1 and 2. In case you have missed that video, you can check the description box below. I have given the link of playlist where you can find out that particular video. Okay, so without wasting any further time, let's start with case study number 3. Now, based at Shivam, Moga, Karnataka, Lotus Switchgears Limited. Lotus Switchgears Limited, which means it is a public company, is noted manufacturer, exporter and supplier of electrical products like MCBs, MCCBs, RCCBs, ELCBs, solar water pumping systems, wires and cables, etc., and has a good network of factories and distribution channels. The business grew by leaps and bounds due to sincere and dedicated efforts of founding directors Arjun, Ramakrishna, Ravi Bhatt, Ramesh, and Ripudaman. However, the company is facing some difficult times for the past 4 years or so. Arjun is the managing director and Ramesh and Ripudaman are the whole-time directors. So Arjun is the managing director and Ramesh and Ripudaman are what? Ripudaman and Ramesh are whole-time directors. In a quest to overcome the difficulties faced by the company, Raghuram, a visionary, was appointed as the executive director at the EGM held on 12th of January 2017. Shruti Components Private Limited, a private company, is one of the subsidiaries of LSL. Okay, public company की subsidiary is also a public company. We all know that as per the definition of public company. The board of directors of LSL wish to exercise the power to dispose of its whole investment in SCPL. Accordingly, Mahadevan, the whole-time company secretary of the company, was directed to ascertain the procedure for disposing of the company's investment in SCPL. Now let us see what information they have given. They have given us the extract of the financial statements for the year ended 31st March 2020. They have the paid up share capital, they have the general reserve, securities premium account, accumulated losses, revaluation reserves created out of revaluation assets, deferred revenue expenditure, miscellaneous expenditure not written off, investment in SCPL. The investment is of 25 crores. Okay. Now, based on the above data and considering Section 2, Clause 57 of the Companies Act 2013, Mahadevan calculated the net worth. Net worth कैसे calculate होगी? Net worth के लिए you are going to consider net worth के लिए 1 second. Net worth के लिए you are going to consider the paid up share capital. You are going to consider the general reserves, the securities premium, accumulated losses, but you are not going to consider the revaluation reserves. You are going to consider the deferred revenue expenditure. So this is coming out to be 50 plus 54 plus 5. This is coming out to be 109 minus 2 and minus 7. This is coming out to be 100. So you have a net worth of how much? You have a net worth of 100. And you have investment of rupees 25 crores. Okay. Now they've given the table also for the calculation of net worth. They are considered paid up, at general reserves, at securities premium, accumulated losses will be deducted, deferred revenue expenditure will be deducted, and you will get the net worth amount, that is 100. Now, if the net, in view of net worth of rupees 100 crores, Mahadevan informed the board that as per the relevant provisions of SCPL, it is an undertaking of LSL. Undertaking की definition क्या होती है? Undertaking की definition होती है अगर किसी भी entity के अंदर investment का जो amount है वो 20% of the net worth से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में माना जाता है दैट पर्टिकुलर एंटिटी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो आपकी अंडरटेकिंग है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट 20% ऑफ योर टोटल इनकम जनरेट करके दे रहा है, तो दैट इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ अंडरटेकिंग. तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें दैट वी हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 करोड़. प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज ऑफ द एरोप्लेन पासिंग बाय. Now 25 करोड़ की हमारी इन्वेस्टमेंट है एंड वी हैव द नेट वर्थ ऑफ 100 करोड़. 100 करोड़ का 20% कितना होता है? 20 करोड़. सो 25 इज ऑब्वियसली मोर देन 20, विच मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर SCPL इज द अंडरटेकिंग ऑफ LSL. ठीक है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये बंदा महादेवन. नाउ earlier, during April 2019, in the course of normal business, LSL entered into a contract with continuous supply of some consumables and components with Swastik Supplies Private Limited for a period of 3 years to be renewed with mutual consent thereafter.
Ramesh, the whole-time director of LSL, was not an interested party. वो interested party नहीं था at the time of entering into the supply contract with SSPL. However, during the second year of supply contract, Rajesh, son of Ramesh, purchased about 30% of the equity shares of SSPL through one of his family-owned business entities and also lent rupees 25 lakhs as an unsecured loan to SSPL. Ramesh did not inform LSL of or the board of directors regarding the new development since he was of the opinion that there was no need for such disclosure. Section 184 का non-compliance कर दिया. However, the company secretary and the board had their own reservations after the matter came to their knowledge from a third party. Now, अब इस केस में देखो सेक्शन 184 का वायलेशन हो रहा है. क्यों? सेक्शन 184 बोलता है कि अगर किसी भी डायरेक्टर का कोई भी इंटरेस्टेड किसी भी एंटिटी में या किसी भी ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर इंटरेस्टेड होता है तो ही हैज़ टू डिस्क्लोज अबाउट द सेम. पहली आपको डिस्क्लोजर्स इस चीज़ के देने पड़ते हैं एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर यू अटेंड आफ्टर बिकमिंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. सेकेंडली, यू हैव टू गिव इट at the beginning or the first meeting of each financial year, and also if there are any changes during the year, in that case also after the change, whichever next board meeting occurs, you have to disclose about your interest. Now in this case, Mr. Ramesh did not make such disclosures, which is a contravention to section number 184. Now, during the statutory audit for financial year 1920, while verifying the earlier year's documents in connection with certain matter, the newly appointed auditors observed that the appointment of Raghuram as an executive director was invalid by reason of certain defects and also disqualification. So, गलत अपॉइंटमेंट कर रखी है हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की. During the month of August 2020, the statutory auditors discussed the issue of irregular appointment of the board of directors of LSL. The board apprised the auditors that since his appointment as executive director of the company, Raghuram had participated in several board meetings and assented to various decisions which had both pecuniary and operational impact. In addition, the board had also passed several resolutions during that period. Accordingly, the board in one of its meetings decided by passing the resolution that the wrongfully appointed director shall make good the losses, if any, for the period he remained executive director, but all the resolutions passed during his period shall be valid and stand good. अब ऐसा कहना सही है या नहीं ये बताओ. सेक्शन 176 आपको याद होगा. सेक्शन 176 बोलता है कि अगर हमारी कोई भी हमने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, द अपॉइंटमेंट वाज डिफेक्टिव एंड द डिफेक्ट केम टू योर नॉलेज later on. In that case, whatever acts are committed or done by the director during his appointment, even when the appointment was invalid, still the acts done by him will be valid only. ठीक है. सो यहाँ पर भी यही चीज़ बोल रही है सेक्शन 167 का कंप्लायंस करते हुए कि हम उसके एक्ट्स को वैलिड मान रहे हैं, बट हाँ अगर कंपनी को इसकी वजह से कुछ लॉसेस होंगे तो ही हैज टू बियर द सेम. ठीक है. One of the investors, Raman, had invested substantially in the equity shares of Lotus Switchgears Limited, that is LSL. Now, however, he was quite worried about his investment after going through the latest audited financial statements for the year 2019-2020, for he found that there was a continuous downward trend in earning per share. He was of the opinion that the directors of LSL have been getting exorbitant remuneration resulting in the lesser profits for the company. Accordingly, he approached the registered office of the company at Shivamoga and requested for inspection of the copies of recent service contracts of Arjun, the managing director, as well as Ramesh and Ripudaman, the whole-time directors. He was utterly surprised when he was informed by the official concerned that the service contracts with Arjun, Ramesh and Ripudaman were not in writing and therefore could not be produced for the inspection. Oh my god. Next, however, he was also informed that only copies of the written memorandum setting out the terms and conditions of service could be provided for inspection. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन मेमोरेंडम तो है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके अंदर लिखी हुई हैं. इफ यू रिमेंबर सेक्शन नंबर 196 के अंदर बोला हुआ है कि जब भी किसी मैनेजरियल पर्सनल का अपॉइंटमेंट होता है, इन दैट केस the terms and conditions should be in writing and it should be approved by the board of directors and later on it should be approved by the shareholders also in the general meeting. तो यहाँ पर they have the written memorandum. written है, oral नहीं है. specifically written memorandum तो है ना जिसके अंदर terms and conditions लिखी हुई हैं. तो क्या हो गया, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, but they still have the proof and section 196 का भी compliance हो रहा है. Now, Raman was not convinced, but Raman मानने को तैयार नहीं है and thought it to be a fraudulent practice for which the company and every defaulting officer of the company must be punished. वो तो बड़ा गुस्सा हो गया, उसको लग रहा है कि punishment मिलनी चाहिए.
Now, LSL, after complying with the required legal formalities, made some political contributions. Okay, तो political contributions का section आपको याद होगा, section number 182, जिसमें दिया हुआ था कि कोई भी government company पर section 182 applicable नहीं होता. That is, they cannot do the political contributions. And also, if a company has incorporated just now, which means the incorporation से अभी तक 3 years नहीं हुए हैं, still they have incorporation जो हुआ है within 3 years हुआ है, 3 years have not passed from the date of incorporation. In that case, they cannot make the political contributions. But other than these two, all can make the political contribution, and there is no limit to which the contributions can be made. But there is a requirement that you have to pass the board meeting, the board resolution has to be passed. Okay, so this was the requirements as per section number 182. Also, it was mentioned that any type of indirect contribution to the political party will also be counted as a political contribution, irrespective of the fact कि आपने directly दिया है या नहीं दिया है. If you incur any expenditure on advertisement, brochures वगैरह, तो भी वो political contributions का ही part बनता था. This was specifically mentioned in section number 182, if you remember that. Now, the details are as under: payment of rupees 10 lakhs to contributions to LMS party. LMS party कोई political party है, उसको contribution किया, definitely it is a part of political contribution under section 182. Secondly, donation of rupees 2 lakhs for public function and dance program of Rangvi Shankar, a film star, and it can be reasonably presumed that his activities support जनता वेलफेयर पार्टी. ये तो बेटा इनडायरेक्ट हो गया, यहाँ पर आपने डायरेक्टली कर दिया था political party को contribution, but here you are indirectly transferring the money, you are donating the money to a political party indirectly. Still, it will be a part of your political contribution under section 182. Next, publication cost of rupees 1 lakh incurred for inserting an advertisement in the souvenir published on behalf of, आप इनके behalf पर कर रहे हो, this is also a political contribution. Publication of pamphlets costing rupees 1 lakh, though not meant for any political party but incurred for promoting a candidate फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस. बेटा ये भी तो पॉलिटिकल पार्टी को ही कंट्रीब्यूशन है इनडायरेक्ट, तो इसको भी हम इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं. तो सेक्शन 182 के हिसाब से दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन. सो इफ वी सी द टोटल अमाउंट विच हैज बीन कंट्रीब्यूटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी इज 10 lakhs plus 2 lakhs plus 1 lakh plus 1 lakh. So it totals out to be 14 lakhs. 14 lakhs is the amount that you have contributed to a political party under section 182. There is no limit for the amount, so कोई problem नहीं है. 14 lakhs की है, बस ये बात है. It has to be disclosed in the profit and loss account. Now, LSL disclosed in its financial statements 11 lakh as political contribution, 3 lakh as advertisement and business promotion. तो गलत कर दिया ना, पूरा का पूरा 14 लाख ही आपका क्या जाएगा, political contribution बन जाएगा. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी. Let's see what questions they have framed from this case study. Raman, who had invested substantially in LSL, was informed that only copies of written memorandum setting out the terms and conditions of service could be provided for inspection, as no written service contracts with Arjun, the managing director, as well as Ramesh and Ripudaman, the whole-time directors, were available. Raman was not convinced and thought it to be a fraudulent practice for which the company and every defaulting officer of the company must be punished, according to him. From the following options, choose the most appropriate one. तो what do you think? कि जो मिस्टर रमन है वो सही है? मेरे हिसाब से नहीं. क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ रिटन मेमोरेंडम जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो चलेगा. लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस दे आर गिवन. द कंपनी शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी, तो नहीं, पेनल्टी लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई गलत काम किया ही नहीं है. सेक्शन 196 का कंप्लायंस अभी भी हो रहा है. It shall be in order if the company provides for copies of written memorandum setting out the terms and conditions of this. तो हाँ ठीक है, ये दे देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी के पार्ट पर. Liable for penalty, no. Liable for penalty, no. So the correct answer for first question is B. I hope you have understood the reason. Let's move on to the next question. According to Mahadevan, whole times company secretary, SCPL was an undertaking of LSL. बिल्कुल ठीक बोला था उन्होंने. If the board of directors of LSL decides to dispose its investments in SCPL, considering SCPL as an undertaking, which of the following options will be applicable? If you remember, whenever we we just sell off or dispose of the undertaking, तो हमें इस केस में क्या करना पड़ता है? We have to pass the special resolution. तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? इस केस में भी special resolution पास करने की requirement आएगी. Let's see.
what options they have given. Now the board of directors shall exercise the power disposing of its investments in SCPL considering SCPL as an undertaking by means of board resolution. स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है भाई यहाँ पर. तो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट. The board of directors of LSL shall exercise the powers of disposing. The board of directors of LSL shall exercise the power of disposing its investment considering SCPL as an undertaking of LSL only with the consent of company by ordinary resolution नहीं होगा, special resolution होगा. The board of directors of LSL shall exercise the power of disposing its investments in SCPL considering the SCPL as an undertaking of LSL only with the consent of the company by special resolution. बिल्कुल ठीक है. And thereafter by seeking the approval of jurisdictional ROC. तो नहीं, jurisdictional ROC की permission लेने की कोई requirement नहीं होती. You just need to take the special resolution approve. मतलब basically you have to get the special resolution passed by the company. सो यहाँ पर देखते हैं. तो अब यही ऑप्शन बचा, तो ऑब्वियसली ये सही होगा, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रीड इट. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ LSL शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ डिस्पोजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन SCPL कंसिडरिंग SCPL एज एन अंडरटेकिंग ओनली विद द कंसेंट ऑफ कंपनी बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन. सो आंसर इज डी फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. आई होप यू रिमेंबर द प्रोविजंस ऑल्सो. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वॉज आई थिंक एज पर सेक्शन नंबर 180 होता था इसका शायद, डिस्पोजल वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, बट मुझे जितना याद है इसका सेक्शन नंबर 180 होता है. ठीक है, let's move on to the next question. From the case scenario, it is observed that during the second year of supply contract, Rajesh, son of Ramesh, purchased about 30%. तो यहाँ पर वो सेक्शन 184 वाला जो कॉन्टेक्स्ट आया था उसकी बात हो रही है कि उसने अपना डिस्क्लोज नहीं किया इंटरेस्ट जो सेकेंड ईयर में अराइज हो रहा था. इनिशियली इट वॉज नॉट देयर बट सब्सिक्वेंटली इट अकर्ड. तो सब्सिक्वेंटली जब अकर हो गया तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में शी शुड हैव डिस्क्लोज द सेम, बट ही हैज़ नॉट डिस्क्लोज. तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी हो जाता है. चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है. फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ऑफ द सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट राजेश सन ऑफ रमेश परचेज्ड अबाउट 30% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ SSPL through one of his family-owned business entities and also lent 25 lakhs as unsecured loan to SSPL. Ramesh did not inform LSL or the board of directors regarding the new developments since he was of the opinion that there was no need for such disclosure. Choose the correct option which is most appropriate to the given situation. द कंटेंशन ऑफ रमेश इज करेक्ट. तो जहाँ पर भी वर्ड करेक्ट लिखा है ना, पहले तो उसी को काट दो क्योंकि ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑप्शन बनाए जा रहे हैं. जो भी करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है उसको काट दो. अब नॉट करेक्ट वाले पर फोकस करते हैं, रीजन देखते हैं और फिर सिलेक्ट करेंगे. द कंटेंशन ऑफ रमेश इज नॉट करेक्ट सिंस ही इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंसर्न और इंटरेस्ट इन SSPL एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड आफ्टर ही बिकम सो कंसर्न. बिल्कुल सही रीजन दे रखा है. फिर भी नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं. The contention of Mr. Ramesh is not correct since he is required to disclose his direct or indirect concern or interest in SSPL during the renewal. जब वो सेकेंड ईयर, यहाँ पर आप देखोगे ना तो सेकेंड ईयर में ही, पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. यहाँ पर मैं आपको फिर से रीड कराती हूँ. इसके भी ऊपर था शायद. हाँ, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो शुरू में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तब ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं. तो डेफिनेटली आप क्या होगे, सेकेंड ईयर से इंटरेस्टेड होगे तो 3 साल खत्म होने का वेट आप बिल्कुल भी नहीं करोगे. आपको सेकेंड ईयर के बाद ही व्हेनेवर यू बिकेम इंटरेस्टेड उसके बाद जो भी बोर्ड मीटिंग होती है उस केस में यू हैव टू डिस्क्लोज द सेम. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डेफिनेटली आपका सी होगा, ना कि डी. ठीक है यहाँ तक. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the case scenario, the board of directors of LSL stated that since January 2017, Raghu Ram had participated in several board meetings and assented to various decisions which had both pecuniary and operational impact. In addition, the board has passed several resolutions during that period. Accordingly, the board is in one of its meetings decided by passing a resolution that the wrongfully appointed director shall make good the losses, if any, over the period he remained executive director, and all the resolutions passed during this period and assented to by him shall be valid and stand good. क्योंकि वो कर भी नहीं सकते थे. कौन सा सेक्शन के हिसाब से इट वॉज रिटर्न कि अगर कोई भी कोई भी डिफेक्ट्स होते हैं अपॉइंटमेंट में एंड बाद में पता चलता है स्टिल द एक्ट्स ऑफ द डायरेक्टर रिमेन वैलिड. कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है ऐसा? सेक्शन नंबर 176 के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर 176 को कंप्लाई किया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. द डिसीजन ऑफ द बोर्ड इज करेक्ट. ठीक है,
because no act done by a person as a director shall be deemed to be invalid if it was subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification. बिल्कुल सही लग रहा ऑप्शन, फिर भी बाकी के कंसिडर कर लेते हैं. The board is required to get all the resolutions passed during the tenure of Raghuram and assented by him, ratified by an ordinary resolution. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. The board is required to get all the resolutions passed during the tenure of Raghuram and assented by him, ratified by special resolution. No, there is no need for that. Now the board is required to cancel all the resolution. नहीं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करने की जरूरत as per section 176. Okay. Let's move on to the next question. The case scenario states that LSL, after complying with the legal requirement or legal formalities, made some political contributions. So section number 182 की बात हो रही है यहाँ पर. And some expenses during the financial year 18-19. LSL showed in its financial statements 11 lakh as political contribution and 3 lakh as an advertisement and business promotion expenses. जबकि उनको क्या करना चाहिए था, पूरा का पूरा 14 lakhs अपना political contributions में दिखाना चाहिए था. From the following options, choose the correct one. The disclosure made by LSL in its financial statements showing 11 lakh as political contribution and rupees 3 lakh as advertisement and business promotion is correct. No, it is not correct. Next question है, was required to disclose 10 lakh as पूरा का पूरा 14 lakh आपको दिखाना चाहिए था political contribution. Let's see the next option. Required to disclose all the sums totaling to 14 lakhs as political contribution. तो yes, this is the correct option. यहाँ पर भी गलत बोल रहे हैं कि 12 और 2 की कोई bifurcation नहीं होनी थी, सारा का सारा ही आपको political contribution में दिखाया जाना चाहिए था. Okay, so we have finished the case study number 3. Let's move on to the case study number 4. Okay, so let's begin with the case study number 4 now. Kumar Beverages Limited. Okay, so this is also a public limited company, a 10-year-old listed company. So it is a listed public company. Is a leading beverage manufacturer and trader whose all the brands are popular household names in India, Middle East, Europe and Africa. Being a fast-growing company, the turnover of KBL was 300 crores during the financial year 18-19. The registered office and the manufacturing plants of KBL are situated in Koluru, Karnataka. Akshay Beverages Limited, ABL, this is also a public company, is an unlisted public company. So it is an unlisted public company. Is one among the leading competitors of KBL and has market presence mainly in South Asia, Southeast Asia, Japan as well as Australia. It had turnover of 700 crores during the financial year 18-19. The registered office of ABL is Kundapura. The manufacturing units are in Hattiangadi, Karnataka. I'm sorry for the pronunciations. If I pronounce any of the words incorrectly, please forgive me. Considering various factors like elimination of competition, scaling up of operations for competitive advantages, economies of large-scale business, increase in market share, cost reduction by reducing overheads, increasing the efficiencies of operations, tax benefits, access to foreign markets, etc., both the companies have been in negotiation for the last several months and a proposal to merge KBL with ABL is in waiting. So this is from the chapter Compromise, Arrangement and Amalgamation. This case study seems to be from that particular chapter. Let's see. It is proposed that KBL shall transfer all its assets and liabilities to ABL. It is estimated that around 95% of the equity shareholders of KBL shall become the shareholders of ABL. Further, purchase consideration shall be discharged wholly by issuing the equity shares of ABL. The beverage business shall continue as earlier. The assets and liabilities taken over from KBL shall be recorded at existing carrying amounts except where adjustment is required to ensure the uniformity in accounting policies. The object clauses contained in memorandums of association of ABL and KBL empower both the companies to undergo merger. All the required institutional and statutory approvals were taken for merger. A draft scheme of merger was approved in the board meetings of the both companies. Both ABL and KBL filed an application for merger in the form of petition along with the necessary documents and information as required under the Companies Act 2013, read with relevant rules with the jurisdiction NCLT, in short the tribunal, for the purpose of sanctioning the scheme of merger. तो मर्जर की स्कीम की एप्लीकेशन वगैरह कौन से सेक्शन के अंदर जाती है, तो सेक्शन होता है इसका 232. इफ़ यू रिमेंबर, this is given in
कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन चैप्टर, तो वहाँ पर पूरी की पूरी सारे के सारे आपके रूल्स वगैरह का सारे सेक्शंस का कंप्लायंस किया है इन्होंने. The tribunal ordered for the required meeting and gave such directions as it felt necessary for conducting the meeting. For the purposes of the meeting, merging companies also circulated some additional documents and information is required under the Companies Act. तो ये भी कौन से सेक्शन के अंदर होता है, ये भी 232 के अंदर ही दिया हुआ है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The tribunal satisfied itself with the procedure followed, including filing of the auditor's certificate. तो ऑडिटर का सर्टिफिकेट फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी सेक्शन 232 में दिया हुआ है कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको नो नॉट 30 डेज, सर्टिफाइड बाय ऑडिटर लिखा है ना, तो ऑडिटर का जो सर्टिफिकेट होता है दिस हैज़ टू बी मैंडेटरीली गिवन, तभी आपका जो है ऑर्डर सैंक्शन होता है. ट्रिब्यूनल आपको ऑर्डर सैंक्शन तब तक नहीं करेगा, आपका मर्जर सैंक्शन नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सैंक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आपने ऑडिटर को सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच इज़ बीइंग प्रपोज्ड इन द मर्जर स्कीम. ठीक है, तो अगर आपका ये सर्टिफिकेट नहीं आया तो ट्रिब्यूनल डेफिनेटली ऑर्डर इशू नहीं करेगा. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक. Now, the tribunal by order sanctioned the arrangement leading to merger and made provisions for all the required matters, which inter alia included valuation of shares and payment to such shareholders of KBL who decided to opt out of the transferee company of ABL. ठीक है, ये भी provisions दे रखे हैं उसमें. Now, a certified copy of the order was also filed with the registrar of companies for registration within the due date. One of the earlier directors of KBL contended that the scheme shall be effective from the date of certified copy being registered by the registrar of companies. However, the scheme has indicated an appointed date being the completion of 15 days from the receipt of certified copy of the ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल फ्रॉम विच द मर्जर शैल बी इफेक्टिव. तो अगर आपको याद होगा तो इस सेक्शन के अंदर ये भी चीज़ दी हुई थी कि आपको आपका जो ये क्या बोलते हैं आपकी जो इफेक्टिव डेट होती है, इफेक्टिव डेट कौन सी होती है, आपकी अपॉइंटेड डेट आपकी इफेक्टिव डेट बनती है. तो इस केस में सिंस इफेक्टिव डेट कब बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो अपॉइंटेड डेट होगी वो 15 डेज बाद होगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल. तो वही आपकी अपॉइंटेड डेट होगी, वही अपॉइंटेड डेट होगी, तो यही इफेक्टिव डेट भी बन जाएगी. ठीक है. Now it is expected that the actual implementation of the scheme of merger is going to take some time. The board of directors of ABL wanted to understand the implementation monitoring procedure by the authorities, and the company secretary was directed to explain the same. It was decided that once the required implementation procedure of merger is completed, the manner of disposing of the books of accounts and papers of KBL shall be discussed. तो क्या books of accounts को आपको dispose of करना पड़ता है या करने की कोई requirement है या करने का कोई option है? तो yes, there is an option. अगर आप dispose of करना भी चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, CG से prior permission लेना पड़ता है इस बात के लिए कि आप अपनी books of accounts को dispose of कर लो. ठीक है. Now It came to light that Nilesh, one of the directors of KBL, had committed various offences by contravening different provisions of the Companies Act. On merger with ABL, it was contended by Nilesh that the wrongful acts were committed before the merger, and therefore he should be relieved from all the liabilities, punishments and penalties for the offences earlier committed. ये तो बहुत ही चालाक बंदे हैं. ये कह रहे हैं कि हमने जो offences किए थे हमने पहले किए थे और अब merger हो गया है तो फिर कोई भी penalty punishment लगने की ज़रूरत नहीं है. No, it is wrong. अगर आपको याद होगा सेक्शन नंबर 240 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको मर्जर से कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा इन केस यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. आपके ऊपर कोई भी पनिशमेंट, लाइबिलिटीज, पेनल्टीज अगर लगनी है तो वो लगेंगी इवन आफ्टर द मर्जर. आपको मर्जर से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है. ठीक है. लेट्स आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट KBL इज अ लिस्टेड कंपनी. ठीक है. नाउ इट इज बीइंग मर्ज्ड विद ABL विच इज एन अनलिस्टेड कंपनी. हमने लिख लिया था ऊपर कौन सी लिस्टेड है कौन सी अनलिस्टेड है. नाउ and under the scheme of merger, KBL shall transfer all its assets and liabilities to ABL. KBL is going to transfer all the assets and liabilities to ABL, and ABL is an unlisted company. बल्कि KBL क्या थी, एक लिस्टेड कंपनी.
तो इधर देखते हैं क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं. डिसाइड एज टू व्हेन द एबीएल शैल बिकम अ लिस्टेड कंपनी. तो लिस्टेड कंपनी कब बनेगी एबीएल? जब वो लिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेगी और फिर लिस्ट हो जाएगी. तो क्या लिस्टेड कंपनी का किसी अनलिस्टेड कंपनी के साथ मर्जर होने से क्या वो अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी? नहीं. अगर एबीएल अनलिस्टेड थी तो वो अनलिस्टेड ही रहेगी इवन आफ्टर दी मर्जर. ABL shall remain an unlisted company until it becomes a listed company. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. ABL shall immediately become a listed company? No. Shall become a listed company after the merger of KBL? No. Shall become a listed company once the application sanctioning the merger is filed with the tribunal since the merger is proposed with the KBL? No. लिस्टेड कंपनी के साथ मर्जर होने से कोई अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं बनेगी. इट विल बी अनलिस्टेड ओनली अनलेस एंड अंटिल इट बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the case scenario, the tribunal by order sanctioned the arrangement leading to merger and made provisions for all the required matters, which inter alia included valuation of the shares and payment to such shareholders of KBL who decided to opt out of the transferee company ABL. From the following options, choose the appropriate one. तो डेफिनेटली आपको जो भी वैल्यूएशन वगैरह होगी वो वैल्यूएशन करनी पड़ेगी. अगर कोई भी वैल्यूएशन मतलब बिना वैल्यूएशन के तो काम चलने नहीं वाला. सेक्शन 232 अगर आपको याद है तो सेक्शन 232 बोलता है कि जो वैल्यूएशन होगी वो एज पर सेबी और उसके रेगुलेशंस के हिसाब से होगी. तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि वैल्यूएशन कैसे हो रही है. तो अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन और पेमेंट फॉर एनी शेयर शैल नॉट बी लेस दैन व्हाट स्पेसिफाइड बाय द आरओसी. नो, आरओसी की बात नहीं हो रही, आरबीआई की बात भी नहीं हो रही. यहाँ पर सेबी की बात होती है. रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी पिक्चर में नहीं आएगा यहाँ पर. सॉरी, सेबी जो अमाउंट डिटर्मिन करेगा उससे कम नहीं हो सकता. तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाली बात भी गलत है. सो द अमाउंट ऑफ पेमेंट और वैल्यूएशन ऑफ एनी फॉर एनी शेयर शैल नॉट बी लेस दैन व्हाट हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. आई होप यू रिमेंबर सेक्शन नंबर 232. यहाँ पर भी अगर आपको कोई सेक्शन रेफरेंस चाहिए तो सेक्शन रेफरेंस यहाँ पर आपका 232 ही होता है. 232 के अंदर ही ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है तो जब तक वो लिस्टेड नहीं होगी वो लिस्टेड नहीं बनेगी डिस्पाइट द फैक्ट को किसी लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज हो रही है. ठीक है. सो सेक्शन 232 से रिलेटेड ही हैं सारे क्वेश्चंस इसमें. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंटेंशन ऑफ वन ऑफ द अर्लियर डायरेक्टर्स ऑफ KBL, द मर्जर स्कीम शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट द सर्टिफाइड कॉपी इज रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस यू आर रिक्वायर्ड टू चूज वन which indicates the correct effective date. तो correct effective date क्या होती है? अपॉइंटेड डेट. और अपॉइंटेड डेट क्या बोली थी? जिस दिन आपको ट्रिब्यूनल से ऑर्डर मिल जाएगा उसके 15 डेज के बाद. Now, the merger scheme shall be deemed to be effective from the date of passing an order by the tribunal. नहीं, 15 डेज बाद बोला है ना. The merger scheme shall be deemed to be effective from the date of receipt of by ABL the certified copy. नहीं, इसके बाद 15 डेज नहीं पास हुए अभी तक. The merger scheme as contended by an earlier director shall be deemed. नहीं, वो तो बिल्कुल गलत बोल रहा था. The scheme shall be deemed to be effective from the appointed date being the completion. तो यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं. appointed date देखनी होती है, वही हमारी deemed effective date बन जाती है. ठीक है. So the correct answer for this particular question is going to be D. Okay. I hope you are participating with me and marking the questions which you are not able to attempt correctly, so that you are able to revise these questions at least once again before your exams. Okay, so keep on marking, keep on participating, जिससे कि आप भी प्रोविजंस को रिकॉल कर पाओगे और जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4.4. It is expected that the actual implementation of the scheme of merger is going to take some time. The board of directors of ABL wanted to understand the implementation monitoring procedure by the authorities and company secretary was directed to explain the same. Which of the following options do you think the company secretary might have suggested? So यहाँ पर देखते हैं. अगर आपको प्रोविजंस याद है सेक्शन 232 के, तो उसमें लिखा हुआ है कि ड्यूली सर्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो है स्कीम की वो आपको आरओसी के साथ फाइल करनी होती है. और ये जो कंप्लायंस की स्टेटमेंट होती है दिस हैज़ टू बी सर्टिफाइड बाय ईदर अ CA, CS और CMA एंड दिस हैज़ टू बी डन इन सम फॉर्म मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ टाइम पीरियड होता है. टाइम पीरियड इज विद इन अ पीरियड ऑफ 210 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर दिस फॉर्म हैज़ टू बी फाइल्ड. ठीक है. तो ये आपका 210 डेज के अंदर अंदर फाइल करना होता है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ईच फाइनेंशियल ईयर, हर एक फाइनेंशियल ईयर से. और ये किससे सर्टिफाई कराना पड़ता है आपको? CA, CS और CMA, किसी से भी करा सकते हो. लेट्स चेक इसमें क्या ऑप्शंस दे रखे हैं. नाउ
ABL shall, until the completion of the scheme, file a statement in such a form and within such time as may be prescribed by the tribunal every year, duly certified by a chartered accountant, cost accountant, or a company secretary, indicating whether the scheme is being complied with in accordance with the tribunal or not. One second. दिस वॉज ओके, हमें बताना है कि क्या ऑप्शन सही होगा. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑप्शन वॉज ABL शैल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द स्कीम फाइल अ स्टेटमेंट. अंटिल द कंप्लीशन मतलब कंप्लीशन जब तक नहीं होती तब तक उसको स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, विच शुड बी फाइल्ड एवरी ईयर टू द ट्रिब्यूनल. यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया ट्रिब्यूनल को फाइल करनी पड़ेगी, बट ये सेक्शन 232 में स्पेसिफिकली बताया कि किसको फाइल करनी होती है, आपको ROC को फाइल करनी होती है. तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो गया. बाकी सब चीज़ें सही थी, बिल्कुल सही लिखा था सब कुछ, लेकिन ये चीज़ गलत थी कि ट्रिब्यूनल को फाइल करनी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम पॉइंट्स लिख रखे हैं, बट यहाँ पर लिखा हुआ है ROC को फाइल करनी पड़ेगी, CA, CS, CMA अंटिल द कंप्लीशन करनी पड़ेगी, एवरी ईयर करनी पड़ेगी, इट हैज़ टू बी ड्यूली सर्टिफाइड एंड एवरीथिंग इज करेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पर मुझे B ऑप्शन सही लग रहा है अभी. तो लेट्स रीड द थर्ड ऑप्शन एज वेल. ABC शैल ओनली ऑन दी कंप्लीशन, ओनली ऑन दी कंप्लीशन नहीं करना होता, टिल द कंप्लीशन करना होता है. तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही आपके गलत हो गए. सो द करेक्ट आंसर इज B, नॉट A, नॉट C, नॉट D. तो B होगा. A और B में से हो सकता था, C और D तो कम्प्लीटली गलत थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना था, यहाँ पर जो पॉइंट था वो ये था कि ट्रिब्यूनल को नहीं करना होता आपको हर साल फॉर्म फाइल, आपको ROC को करना होता है. ठीक है. दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन. इफ यू न्यू सेक्शन 232 तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा ये क्वेश्चन. आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज According to the case scenario, Nilesh, one of the directors of KBL, had committed various offences. And ये भाई साहब बोल रहे थे कि क्योंकि मर्जर हो गया तो मैं बच गया, मेरे ऊपर कोई भी ऑफेंसेस अब एप्लीकेबल नहीं होंगे. तो यहाँ पर ये गलत बोल रहे थे. क्यों? क्योंकि सेक्शन 240 के अंदर इनको ऐसा कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया गया है. Now, according to the case scenario, Nilesh, one of the directors of KBL, had committed various offences by contravening the different provisions of Companies Act 2013. On merger with ABL, it was contended by Nilesh that the wrongful acts were committed before the merger, and therefore he should be relieved from all the liabilities, punishments, and penalties for the offences committed earlier. From the following options, choose the correct one. The contention of Mr. Nilesh is not correct. करेक्ट वाले तो आप पहले काट दो. सबसे इजी ऑप्शन होता है एलिमिनेशन वाला. अगर आप आंसर के लिए श्योर हो ना, सबसे पहले जो गलत है उनको काटो. करेक्ट वाले आप पार्शियली करेक्ट भी काट दो, क्योंकि गलत ही है, कहीं से भी सही नहीं है. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन और D ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है. द कंटेंशन ऑफ मिस्टर नीलेश इज नॉट करेक्ट सिंस द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 बाय द ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी प्रायर टू इट्स मर्जर, अमालगमेशन और एक्विजिशन शैल कंटिन्यू even after the merger or acquisitions. First answer seems to be correct. Let's read the fourth one also. The board of directors of ABL are permitted to relieve. No. बोर्ड के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो उसको परमिट कर दे. तो करेक्ट आंसर आपका ऑब्वियसली A हो जाएगा एज पर सेक्शन 240. ठीक है. Let's move on to the next question. According to the case scenario, once the required implementation procedure of merger is complete, the manner of disposing of the books and papers of KBL shall be discussed. From the given options, choose the appropriate one. तो यहाँ पर disposal of books and papers की बात हो रही होगी. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि books and papers को आप dispose of कर सकते हो, लेकिन that can be done only with the prior permission of CG. So the books and papers of KBL can be disposed immediately on merger. नहीं बाबा नहीं. The books and papers of KBL can be disposed of not earlier than 8 years. नहीं. Books and papers of KBL can be disposed of only after obtaining permission from the central government. बिल्कुल सही. The books and papers of KBL can be disposed of only after obtaining permission from the tribunal. No, tribunal से नहीं, central government से हमें permission लेनी होती. So this was also a direct question. Section इसका था 239. 239 के अंदर हमें books and papers से related बातें दी हुई थी. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से आता होगा. तो आपके लिए ये बहुत ईजी केस स्टडी हुई होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं दिया हुआ था. तो या दैट वाज एन ईजी case study number 4. So that's all for today guys. Thank you so much for watching this video. अगर आपको case studies करने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को. अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. दिस रियली गिव्स मी मोटिवेशन टू वर्क मोर and provide you more content. So please subscribe to the channel. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.